Assalamualaikum viewers, I hope you all are fine. My name is Naila Tareem and I welcome you all to Javed Publishers. आज हम किड्स इंग्लिश ग्रेड 3 चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, तो चलिए चलते हैं. टेक आउट पेज नंबर 61 ऑफ योर टेक्स्ट बुक. लैंग्वेज फोकस, लर्निंग टू स्पेल homophones. Homophones are the words having the same pronunciation with different meanings and spellings. दो ऐसे वर्ड जिनके स्पेलिंग्स डिफरेंट होते हैं लेकिन उनकी साउंड, उनकी प्रोनाउंसिएशन जब हम उन्हें बोलते हैं तो वो सेम साउंड करते हैं. फॉर इंस्टेंस, ये एग्जाम्पल्स नीचे कुछ दी गई हैं. नॉट एंड नॉट, NOT नॉट, KNOT नॉट, K इज साइलेंट. देयर स्पेलिंग्स आर डिफरेंट लेकिन इनकी जो साउंड है वो सेम है, प्रोनाउंसिएशन सेम है. एक का मतलब है नहीं, नॉट, और KNOT नॉट का मतलब है गिरा. तो इनके मीनिंग्स डिफरेंट हैं, इनके स्पेलिंग्स डिफरेंट है, बट देयर प्रोनाउंसिएशन इज सेम. अब नीचे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं और साथ उसके होमोफोन्स दिए गए हैं. हमने बताना है इस सेंटेंस में कौन सा सही वर्ड जो है वो ऐड होगा. द डैश क्लाइम द ट्री. क्लाइम वुड नहीं बोल रही मैं, क्लाइम, क्लाइम, बी साइलेंट, क्लाइम द ट्री. बेर और बेर, BARE bear नंगे पाँव, BEAR bear reach. The bear climbed the tree. The bear, BEAR. I bought a new dash of shoes. Pair, pear, PAIR pear जोड़ा, PEAR नाशपाती. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, PAIR pear. I saw some beautiful dash in the garden. Flowers or flowers. एक है आटा और दूसरा है फूल. सो आई सॉ ब्यूटिफुल फ्लावर्स, फूल. माई डैश हैज वॉन द कंपटीशन. मेरे डैश ने कंपटीशन जीता. सन, सन, SUN सन, सूरज, SON सन, बेटा. सो किसने जीता कंपटीशन, बेटे ने, SON सन. लास्ट, द डैश लुक्स calm एंड स्मूथ. calm, L is silent, calm. The dash looks calm and smooth. Sea or sea, SEAC समंदर और SEEC देखना. क्या बहुत पुरसकून और स्मूथ लग रहा है, sea समंदर, SEA. Now unscramble the given word. The words are taken from the lesson. Lesson में से कुछ words उसको आपको स्क्रैम्बल करके दिया है, आपने उनको रीअरेंज करके देना है. THERMO it's mother. NARALTU it's natural. ARDE it's dare or dare. Number 4 is EVAS it's save. YLEKA it's leaky, and the last one CHNLU it's lunch. Adjectives. Encircle the adjectives from given sentence. First of all, what are adjectives? Adjectives होते क्या हैं, किसी भी चीज़ की क्वालिटी, सिफ्त को, अच्छाई, बुराई को बयान करना adjectives होता है. Reminder, adjectives are used to describe a noun or a pronoun. Adjectives किसी भी noun या pronoun की description में use होता है, like उसकी quality बताना, उसकी खूबी, खामी बताना. Umar wants to buy the best present for his friend. So the best is adjective. The girl waited for the yellow bus. The yellow is the adjective. The kids have finished their delicious dinner. The delicious is adjective. You need to be tricky to solve this puzzle. Yes, tricky is adjective. I have a fat cat and a white dog. Yes, fat is an adjective and a white is also an adjective. Now articles. A bed and bed. Consonants. Wall. Do you remember? A and is used with singular and they are not used with plural. यहाँ पे हमें बताया गया है कि किन वर्ड्स के साथ हम अ यूज़ करेंगे, किसके साथ एन यूज़ करेंगे. कॉन्सोनेंट्स के साथ हम अ यूज़ करते हैं और वॉवल्स वर्ड्स के साथ हम एन यूज़ करते हैं. सो चूज बिटवीन ए एंड एन टू कंप्लीट द सेंटेंस. अली हैड बनाना फॉर लंच. अली हैड अ बनाना. Bilal and Ahmed arranged birthday party for their grandparent. A birthday party or an birthday party? Yes, it's a birthday party. He used dash exit sign to go out of the building. A exit sign or an exit sign?
Yes, it's an exit sign because E is wall word. Now complete the given paragraph using the articles from the word bank. Yesterday I was sitting in dash train. In a train I saw a strange woman around the platform. She came into carriage of a train. She sat beside me. I was eating an orange and holding the newspaper in the other hand. When I read the newspaper, there was a picture of that same woman. She was a famous writer. I captured a picture with her and then she left. Moving on to the next page, present continuous tense. Present continuous tense indicates the continuity of action taking place. अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, 3 तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं. अफर्मेटिव में हम नॉट का यूज़ नहीं करते हैं, नेगेटिव में हम नॉट का यूज़ करते हैं और इंट्रोगेटिव में हम जो हमारी कोई भी इज एम आर जो वर्ब है उसको हम स्टार्ट में ले आते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अली इज क्राइंग, अफर्मेटिव. अली इज नॉट क्राइंग, नेगेटिव. इज अली क्राइंग, that is interrogative. Now encircle the verbs showing present continuous tense. The boy is dusting the windowsill. So what he is doing? और यहाँ पे क्या continuous को बता रहा है जिस word के साथ ing होगा. So dusting. The kids are playing with toys. Playing. Ahmad is wearing a red jacket. Yes, wearing. The cat is sitting on a sofa. Yes, very true. Sitting is the verb showing continuous tense. Writing skills. Make any 5 sentences using प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. ये ऊपर सारे इन्हीं चीज़ों को यूज़ करते हुए आपने नए सेंटेंसेस बनाने हैं, बट देयर शुड बी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर्म में होने चाहिए. अ पाई चार्ट इज यूज्ड टू कंपेयर पार्ट्स ऑफ अ होल. रीड द गिवन इन्फॉर्मेशन इन पाई चार्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. एक आइसक्रीम स्टॉल लगाया हुआ है और उसके साथ एक पाई चार्ट है. उसमें डेज ऑफ वीक्स बताए हैं और ये बताया कि हर वीक में कितनी आपकी जो आइसक्रीम्स हैं वो सेल हुई हैं. उसी के हिसाब से उन्होंने आपसे क्वेश्चन आंसर्स पूछे हैं. व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ आइसक्रीम सोल्ड ऑन थर्सडे? लुक एट द पाई चार्ट. थर्सडे कहाँ लिखा हुआ है उसकी तरफ जाइए और उसके नीचे जो डिजिट लिखा हुआ है उसको देखिए. कितने आइसक्रीम सेल हुए ऑन थर्सडे? व्हेन डज द आइसक्रीम सेलर सेल मोस्ट ऑफ द आइसक्रीम? तमाम डेज ऑफ वीक में सबसे ज्यादा आइसक्रीम किस दिन जो है वो सेल हुई है? नाउ ऑन विच डे 100 आइसक्रीम्स आर सोल्ड? किस दिन जो है वो 100 आइसक्रीम सोल्ड हुई हैं. आई होप सो ये एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ आ गई होगी और आप जो रिमेनिंग कंसेप्चुअल चीज़ें हैं वो खुद से करने की ट्राई करेंगे. कीप वॉचिंग. अपना बहुत सारा ख्याल रखिए. जुड़े रहिए बोलती किताबों के साथ.